Good morning student, I am Harpreet singh, lecturer of mechanical engineering department. ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ RAC ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਐਂਡ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੈਪੋਰੇਟਰ ਥੋੜਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਫੈਕਟਰ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਹੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆਫ ਐਨ ਵੈਪੋਰੇਟਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਹੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੈਪੋਰੇਟਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। सब तो पहला मटीरियल देखो, इन ऑर्डर टू हैव रैपिड हीट ट्रांसफर इन एन evaporator the material used for the construction of an evaporator coil should be good conductor of heat। ठीक है, जो मटीरियल होना चाहिए गुड कंडक्टर ऑफ हीट होना चाहिए। द मटीरियल विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द रेफ्रिजरेंट मस्ट आल्सो बी सिलेक्टेड। वो मटीरियल सिलेक्ट करना चाहिए जोड़ा कि रेफ्रिजरेंट ना अफेक्ट करे। Since metal are best conductor of heat, ਜਿਹੜਾ metal ਹੁੰਦਾ best conductor of heat ਹੁੰਦਾ ਹੈ, therefore they are always used for evaporator। evaporator ਵਾਸਤੇ यूज़ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Iron and steel can be used with all common refrigerant। Brass and copper are used with all refrigerant except ammonia। Aluminium should be not be used with freon। Ammonia नहीं यूज़ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ freon ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਤੇ brass and copper ਆ ਉਹ यूज़ किया जाता है विद ऑल रेफ्रिजरेंट एक्सपेक्ट अमोनीआ। ठीक है, अमोनीआ में नहीं यूज़ किया जाता। नैक्सट देखो, टेम्परेचर डिफरेंस द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द रेफ्रिजरेंट विद इन द evaporator and the product to be cooled play an important role in the heat transfer capacity of an evaporator। The following table show the just temperature difference for the same of the product to be cooled। यहाँ टेम्परेचर लिखे पे है, ठीक है, कूलिंग टेम्परेचर, रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, किस वास्ते चाहिए, वेजिटेबल वास्ते कितना चाहिए, फ्रूट वास्ते कितना चाहिए, क्रीम मिल्क वास्ते की चाहिए। इट मे बी नोटेड दैट टू लो टेम्परेचर डिफरेंस may cause lime on certain product such as meat। On the other hand, too high temperature difference cause excessive dehydration। Next, velocity of refrigerant। The velocity of refrigerant also affect the heat transfer capacity। जो velocity है वो भी affect करता है heat transfer capacity of an evaporator। If the velocity of the refrigerant flowing through the evaporator increase, the overall heat transfer coefficient also increase। But this increased velocity will cause greater pressure loss in the evaporator। Thus the only recommended velocity for different refrigerant which give high heat transfer rate and allowable pressure loss should be used। Next, thickness of the evaporator coil wall। The thickness of the evaporator coil wall also affect the heat transfer capacity। ਜਿਹੜੀ ਵਾਲ ਉਹ ਵੀ ਹੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਉਹ ਵੀ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ heat transfer capacity of the evaporator। In general, the thicker the wall, the slower is the rate of heat transfer since the refrigerant in the evaporator coil is under pressure। Therefore, the evaporator walls must be thick enough to withstand the effect of that pressure। It may be noted that the thickness has only a slight effect on total heat transfer capacity because the evaporators are usually made from highly conductive material। Next, contact surface area। An important factor affecting the evaporator capacity is the contact surface available between the walls of a evaporator coil and the medium being cooled। The amount of contact surface in turn depend basically on the physical size and shape of the evaporator coil। Next, heat transfer in evaporator। The heat transfer in evaporator has the following three resistance in its path। The resistance of medium being cooled, this may be air, water, brine or any other fluid or wetted surface of the coiling of the cooling and dehumidifying coil। Next, the resistance of metallic wall of the tube liquid। Next, the resistance of cooling medium refrigerant film which get heat from solid metallic walls। ठीक है, इन्होंने याद कर लियो, पढ़ लियो। ओके, जे कोई प्रॉब्लम होई तो पुछ लेना। थैंक यू।